हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मालदीव्स का एक लग्जरी आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे। इस ट्रिप के लिए हमने जो फ्लाइट बुक किया था वो कोची से था, क्योंकि यहाँ से फ्लाइट टिकट्स का कॉस्ट और ट्रैवल टाइम दोनों ही कम है। मालदीव्स का वीज़ा ऑन अराइवल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने चुना कंडीमा आइलैंड्स, जो कि एक लग्जरी आइलैंड है और माले एयरपोर्ट से ये काफ़ी दूर है। तो यहाँ पहुँचने के लिए हमें माले एयरपोर्ट से एडिशनल फ्लाइट लेना पड़ा और आइलैंड तक का पूरा ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो मैं आगे बताऊंगा। हमने सारी बुकिंग्स कंडीमा के वेबसाइट पे कर ली थी। माले एयरपोर्ट से आइलैंड तक का ट्रांसफ़र जो है सब कुछ इंक्लूडेड था। हमारा 3 दिन का ट्रिप था, जिसमें हमने 2 दिन बीच विला और 1 दिन के लिए ओशन विला बुक किया था। माले एयरपोर्ट पे कंडीमा आइलैंड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपको पूरे ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में गाइड करेगा। हमें माले एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके उतरना है ढालू एयरपोर्ट पे। ढालू एयरपोर्ट से बस ट्रांसफर लेके स्पीड बोट के पोर्ट पे उतरना है। स्पीड बोट से वो आपको आइलैंड पे ड्रॉप करेंगे। आइलैंड पे आते ही वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया जाएगा और रिसेप्शन पे जाके चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना होता है। फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद वो आपको अपने विला पे ड्रॉप करेंगे। चलिए अब बीच विला का एक छोटा सा टूर दिखाता हूँ। चलिए अब आइलैंड के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। आइलैंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने विला आए और घंटों हमारे प्राइवेट पूल में रहे। मालदीव्स का वेदर काफ़ी गर्म होता है और यहाँ का वाइब इतना अच्छा है कि आपको पूल से निकलने का मन ही नहीं करेगा। इस विला का नाम बीच विला इसलिए है क्योंकि ये बीच को टच करके बांधा गया है। कुछ देर पूल में रिलैक्स करने के बाद हम गए बीच पे।
डे 1 हमने बीच विला पे बस चिल करते हुए बिताया। डे 2 की शुरुआत हमने की कायाकिंग एक्टिविटी से और उसके बाद हमने चेक इन की हमारे अगले विला जो है ओशन विला। बीच विला की तरह इसका नाम ओशन विला है क्योंकि ये ओशन को टच करके बांधा गया है। चलिए रूम का टूर दिखाता हूँ। बीच विला की तरह यहाँ पे भी हमने घंटों चिल किया और तेज बारिश भी होने लगी। डे 3 हमने जेट स्की ट्राई किया जिसमें 30 मिनट का समय दिया जाता है और 15-15 मिनट हमने राइड डिवाइड कर दिया था। अब मैं आपको एक्वा विला का एक टूर दिखाता हूँ।